This is basically the cellular jail in Andamans. So respect and prayers to the freedom fighters who has given us this freedom. नमस्कार, मेरा नाम तिरुपति है। आप जिस ब्लॉक से पेंटर किए हैं ये उस ज़माने के एडमिन ब्लॉक हुआ करते थे। जेलर, असिस्टेंट जेलर के ऑफिस उनका रेसिडेंशियल हुआ करता था। नाउ वहाँ पे एक एग्जीबिशन गैलरी, फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कालापानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए और जेल के निर्माण कैसे हुए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया, बर्थ ऑफ सेलुलर जेल, हॉरर ऑफ सेलुलर जेल। एंड रीडिंग सेक्शन है, इफ़ यू हैव अ टाइम टू रीड and if you not have a time to just understand, you just give something, for the next generation. उनके पास we are not having time to spend. So if they ask question, so what is this, can you tell some that what is this, so उस समय उनको realize करवा सकते हैं what's the value of this and what's the value of our dad and our parents. So हम एक as a parents होने के बाद अपने आप को introduce कर सकते हैं. History is not a past, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड अदर साइड हमारे लिए एक फ्रीडम फाइटर्स की फोटो डालते हैं. फ्रीडम फाइटर्स मैक्सिमम बंगाल एंड पंजाबी से आज़ादी के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद. तो उस कारणवश वहाँ पे ओल्ड एज फोटोग्राफ्स आपको दिखाई देंगे. सर जेल के एंट्रेंस में ये दो फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत. इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर. 48 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने में. इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करता है. वाइट कलर के प्लेटफॉर्म, मार्टिस कॉलम, मार्टिस फॉर ऑल, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ फॉरगिवनेस. ये पीपल ट्री, ये पीपल ट्री जेल के अंदर मेन कैरेक्टर है. ये पुराने पेड़ जो एक्चुअली जेल जहाँ पे सिचुएटेड है, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट, डेंस फॉरेस्ट थी. फॉरेस्ट को क्लीन करने के समय सारे पेड़ कट चुके थे. इसमें से जो पेड़ रहा 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया, जिसके माध्यम से आप साउंडर लाइट शो देखेंगे. साउंडर लाइट का मेन कैरेक्टर ये जो सेलुलर जेल, इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक. अब देख पा रहे फ्रंट बैक ऐसे 7 विंग बनवाया गया, 7 इंडिविजुअल ब्लॉक्स. इंडिविजुअल ब्लॉक को देख लेने विद सेंट्रल टावर. सेंट्रल टावर इज एक्सिस पॉइंट, हेक्सागन एंड हेक्टागन. इट्स लुक लाइक सेलुलर से बायोलॉजी के नेम इंटरकनेक्ट किया गया. ईच ब्लॉक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, दे हैव 3 गार्ड्स इन द कॉरिडोर. दैट मीन ईच ब्लॉक ट्रिपल स्टोरी है तो कॉरिडोर में गार्ड होते थे जो गार्ड करने के लिए. एंड वन गार्ड इन द सेंट्रल टावर कैन वॉच इन आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल. इज़ अ यूनिक डिज़ाइन. एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल टावर, वहीं पे जाना है, वहीं से हम लोग एंट्री एंड एग्जिट करना है. बाहर भी आना है, इन बिटवीन 2 ब्लॉक यहीं से बाहर निकलना है. ये जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया और इसकी एस्टिमेट कॉस्ट 5,19,350 रुपीज़. व्हेन दे फिनिश्ड ऑफ, मोर देन 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किया गया. इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक. 1938 मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स को रिहा कर दिया गया. 39 वर्ल्ड वॉर 2. 1941 is a major earthquake in Andaman. That's a big loss for British. What happened? What happened? 1941 is a major earthquake in Andaman. Okay. So that's a big loss for British people. And that this Andaman is a seismic zone, sir. Right. 1881, 1941, and 2004. But what happened? 1881 and 1941, in between 60 years, is a well developed in that time. That time, 38 they release all. They utilize 1/3 for the other country. 1939. 41 is a major earthquake. They lost women laws and property laws. That's what they decide. This island is not safe for us, so better to skip here. Has a boycott this island. So when they start boycott this island, 1942 Japanese occupied it. Japanese period is a 3 years. British left this island 1941. So during the World War and earthquake, because of earthquake. 1942 when the Japanese occupied here. Some of people, Indian people, those settled here. So they are done white collar job under British government. They said they are spy of British. They not believe Indian people, those done white collar job. So उन लोगों को जासूस बोलते थे, स्पाई बोलते थे और प्रिजन में बंद किया जाता. एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, वो जापानीज इंडियंस को कलेक्ट करते थे प्रिजन से और दे डंप टू द सी, समंदर में फेंक दिया जाता था. एंड ड्यूरिंग द टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे विजिट करते हैं. जब उनकी विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है वैसे नहीं बताया गया. एंड 30th December 1943 इज़ वेरी प्राउड टू से इंडियन ट्राइकलर. राइट ऑपोजिट साइड वी हैव अ बिग ग्राउंड. नाउ इज नेताजी स्टेडियम. अर्लियर प्रीवियस इज अ जमखाना ग्राउंड. नाउ इज नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं. एंड देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर. आफ्टर हिरोशिमा, जापानीज ऑल्सो बाइकॉट दिस आइलैंड. अगेन ब्रिटिश ऑक्युपाइड.
आफ्टर 3 years एंड 3 years के बाद जब ब्रिटिश आए रिपब्लिक तक रहा, रिपब्लिक के बाद ही अंडमान इंडिया के पास इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 ब्लॉक्स बनवाए गए थे जो आर्म्स, उसमें से कुछ ब्लॉक लैंडस्लाइडिंग में डैमेज हुई जिससे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को मजबूरन डैमेज ब्लॉक्स को निकाल कर वहाँ पे हॉस्पिटल दिया। आउट ऑफ 7 नाउ वी हैव ओनली 3.5, 1 building Sparta wall we have and rest of 3 blocks we have intact as it is. Wing number 1 7, इसके back portion wing number 6 and all identical cell. What the size of cell? I'll explain inside of the tree. So first of all हम लोग फांसी का देखेंगे gallows, then workshed, cell के बारे में explanation. My explanation will be closed in the second central tower second floor and उसके बाद आप ऊपर तक क्लाइंब कर सकते हैं बिकॉज कन्वीनियंस नहीं है ऊपर सेंट्रल टावर में क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि रिस्टोरेशन वर्क चल रही है तो वहाँ पे सैंड स्पेस नहीं है. यू कैन क्लाइंब अप, यू कैन टेक अ फोटोज आपसे व्हाइल कमिंग बैक द सेम वे आपको आना है. तो फर्स्ट स्पॉट हम फांसी का स्टार्ट करेंगे. गैलो हैंगिंग हॉस्पिटल. हाँ, सो ये दोनों किचन भी डिवाइड एंड रूल यानी कि यूनिटी को ब्रेकअप करना है. डिवाइड एंड रूल यानी कि यहाँ पे जिन फ्रीडम फाइटर्स को लाते हैं दे आर वेरी करेज, सो दे रेडी टू फाइट द डाई फॉर द नेशन. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिश. So after coming back here, if they start revolt, we are not able to control the people. That's what they make 2 kitchens. And the other side is a gallows hanging room where they have to hang. So we have no any records how many people are hanged here. Suppose if they want to hang the people, no need to brought from the mainland. So after coming back here, sometimes it's happened. Suppose if they kill someone and they're not able to send back again. In that time, if you want to hang the person, so before execution, in this building, the ground floor is a first cell, there's a confirmation cell, that means condemned cell, last day of life. They have to wait for the day. And before confirmation, if they died earlier, file comes close. So suppose it's not happened, if they want to hang the person, after medical exam, so they ask question, what's the last wish? Last wish means after death, what we are doing. So that same thing is before, when they're alive, they have to do themselves. And this is a place for last ritual, before execution. This white color one. And after complete the rituals and all, at the time 3 people. We have provision is 3. Wooden beam, platform lever, 3 thing is original. Rope is made. If you pull the lever is a trap door. When they fall down the body, more chance to break the cervical cord. Suppose if they survive and law and order, they are not able to hang again. That's what in between the rope, they use metal ring to compress the throat. Hang till the method of hanging. We have no records how many people are hanged here. So this is the basically a gallows place where people used to be hanged. यहाँ पे लोगों को लटकाया जाता था. रोप नया है, रस्सी नया है. Okay. और रोप के बीच में देखिए कैन सी द मेटल रिंग जो थ्रोट कंप्रेस हो जाएगा. इसके मैकेनिज्म देखिए ना सर, ये जो बॉडी शेक ना हो उसमें जो लॉक किया है ना डेप्थ, ये क्योंकि ये प्लेन रहेगी, बॉडी शेक होने के बाद 2 बॉडी के बीच में इंट्रैक्ट होगा तो ये जो है ब्लॉक कर देंगे, लॉक होगा, बॉडी यहीं पे इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं डेप्थ. We can't go inside, no? What's the room while slamming or getting down? Yeah. Okay. So basically, this is a holy place. Basically holy for all Indians because these are the martyrs. यहीं पे वो देशभक्त थे जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिया है. So this is holy for all Indians. This is a place where British used to hang and the dead bodies used to fall from this place. Okay.
structure is original and roof and wooden structure newly modified. And now we have two parts. Other side we have storeroom and other side is a photo gallery. This is a big one. Indoor work and outdoor work. Dangerous and not so dangerous. First they will remove the coconut husk. And this process is 1 or 2 coconuts afterwards. There's a more chance that when they mostly they chew. So they're not able to control the hand. So directly it comes in it. Here the portion will be damaged, and when we add the husk, this husk is very toughest one. And after you do that, and they have to make a saw, they have to help of puja and ama, they have to make bonding fibers, they have to collect fibers, bonding fibers. And after collecting bonding fibers, they have to make this type of rope. And there's a bunch of fibers. When they rotate the wheel, more also won't move out. And when they release the fibers, so more damage the fingers. If they not complete the work, they have to extract 30 pound coconut oil, 10 pound mustard. This is one more target. And this oil grinding machine is a model, and that one is the original. They use 2 type of weight with oil grinding machine to make sure to tie the stem, and they treat like oxygen. Sorry to say. In 360 degrees, they will start round and round. Except that it is some other relation. Suppose if they not complete the work, and they give more punishment. And this is called flogging and punishment. Aiming and punishment in front of all people, they have to realize that psychological torture. Psychology is not British on Indian to another Indian. If they select British to Indian, they know that we are not able to control the people. Because 25% is British, 75% is Indian style. So again, British scared about it. So that's what in between us, Jamada, Tendal, guard, warden, petty officer. Sometimes they are direct recruit, and someone after release, someone okay that British government. So finally, they are Indian, no? One Indian to another Indian. So they never raise voice again. Still there is comes also. The psychological culture. As a broad to people, but the partition time. With uniform, they use this type of metal ring in the neck ring. They put it something. If you are wearing something small thread also, which is not useful to you. Small thread also irritates you sometimes, correct? And the British knows how courageous person. Ready to die for the nation. So there's a big problem. We have to stop some thinking. So they introduced this type of metal ring. Nowadays we are saying positively, sorry to say, ID proof. ID proof is a positivity because we are working in a reputed company and I'm studying in a reputed school. That means we are proud to gather. That is a positivity. And here is just opposite side. And they make a slave of country. And without any permission they enter our country. They are holding something which is not usable. Thinking. So things will be tied. And without any permission, someone look forward. Aggressiveness is a more successful. While deportation time, chain feeder is a more chance to escape from the ship. Again, the British cat. And after coming back, is a bar feeder straight rod, is not able to bend the knee. This 2 feet rod, and what you're holding in the neck hand, it comes in the wrist. And third one is the toughest one. There's a 16 inches rod in between the leg, unable to walk. In this condition, they have to work indoor and outdoor work. And punishment uniform is a jute, sock, easy to identify. Compared with other, is a punishment political provider. What they're saying, introduction is a waste of time. When you start into it, it will take a long time. Dress code and punishment code, easy to judge. Why they give this type of punishment for him. And suppose that newcomers are coming, they never raise voice against British. So, behind psychology, again British scared about it. It's everything psychology, but always British scared. So because of how people is very strong, now also they are very strong. So they use inside the kitchens and they will sell the product. So local people also settled here, not the settlers people. Yeah, that's It's made from string and steel. this is a wire, new. Wire. But earlier Earlier days is steel. This is new one.
बिल्डिंग में 126 cells are and community bodies ground per second. First floor guards, remaining cells freedom fighters. In all identical cells, 13.6, 7.6 feet, 7 feet height is the ventilation, 3 feet length, 1.5 feet height, totally 10 feet height. And that time cement ने the wood और limestone ने बनाया हुआ है material. Each cell one person को provide करते थे इस तरीके से wooden plank, एक blanket. यदि refuse का जा रहा है, they have to sleep in ground. Leeches and mosquito bites. मलेरिया के कारण काफी ध्यान से करते थे. खाने की जो बर्तन होती थी आयरन पॉट वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करने के समय रेस्ट होम में रहती थी. सेंटर फूड पॉइजन होने के कारण देखा नेचुरल कॉल की फैसिलिटी सेल में नहीं थी. डेढ़ टाइम इन्हें बाहर में काम करवाते थे. डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट विल टेक लॉन्ग टाइम. हम बाहर जाएंगे और अंदर बंद करते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाएंगे. दैट आर नो फैसिलिटीज. तो क्ले पॉट प्रोवाइड करते थे. क्ले पॉट इज द लिमिट. इफ दे क्रॉस द लिमिट पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगा. therefore they take less food. When they take less food, ration goes rather so food is health goes very less. It's very critical situation. इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखा जाता था. उसके कारण ये थी स्पेसिफिक सेल में उनको रखा जाए जो जगह उनके लिए अडैप्ट हो जाएगा. While they coming outside, communication increase होगी. Communication is a big problem for business. They make a group. Group is a big problem. That's why every 45 days they suffer the cell one place to another place. This is called solitary confinement, mental torture, private punishment. सारे सेल आइडेंटिकल है. यहाँ पे आप देख रहे हैं सचिना सांगल उनकी पनिशमेंट पीरियड 1911 to 1921 बनारस कॉन्स्पिरेसी में लाया गया. एंड रिहा होने के बाद अगेन काकोरी केस में उनको लाया गया 1924. काकोरी केस में चंद्रशेखर आजाद ग्रुप भगत सिंह ग्रुप्स को मोटिवेट करते थे और आर्म्स सप्लाई करते थे. 1924 में आने के बाद 38 के समय रिहा हुए और रिलीज होने के बाद इनकी डेथ बनारस में हुई 1942 में. और यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन फिजिकली चैलेंज पर्सन आते हैं जो पीपल नॉट एबल टू क्लाइम अप. तो उनके लिए यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे कुछ लोग फर्क भी कर जाते हैं. मतलब इस जगह की वैल्यू एक ओवरशिप प्लेस जैसी है. सो उसे हम रीच करने के समय प्रॉपर वे में रीच करवाना है. नेक्स्ट जनरेशन को बताना है तब जाकर कुछ फील होगा. तो वहाँ पे हम एक फोटो रखने के कारण एटलीस्ट पीपल छूएंगे नहीं. इसको एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के साथ देखें. Right. So this used to be a place where food used to be given, right? Serve the food. Serve the and food. other side is a locking system, sir. Okay, locking. Okay. They're not able to open. Okay, okay. It's in the middle central. They use big lock here. Okay. So technically they can't open this. You can see this model of the cellular jail. Okay. And you can see the name list of freedom fighters: Maxim, Bengal, and Punjabis. The United Province, Central Province, Madras Presidency, various part of India. तो सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब से थे. एंड यहाँ पे तो इस बिल्डिंग के लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी के सेल है. कालापानी मीन्स काल समय को कहा गया. तो व्हेन सन गेटिंग डाउन सैडोस फॉलो द वाटर. जब नीला समुद्र पानी में हरियाली गिरता है स्टुक लाइक दैट. तो हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले मर जाएंगे. पैसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाएंगे. जो सोच है ना पॉजिटिविटी के कारण आज हम आज़ाद हैं. तो ऐसे लोग यहाँ पे थे. तो सावरकर जी अपनी बायोग्राफी मेंटेन करते हैं. मुझे अंडमान कालापानी में सबसे ज़्यादा दिन के सामने रखा गया. सावरकर जी की पनिशमेंट पीरियड 50 इयर्स की 1911 to 1961. और यहाँ पे वो 10 इयर्स रहे 1911 to 1921. 2 इयर्स उनको ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ऑल्सो इन द सेम प्रिजन. वाइल शिफ्टिंग इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती है. द फर्स्ट एंड लास्ट मीट एंड 1919 अमृतसर वाले इंसिडेंट के बाद इंडिया में रिवॉल्ट की स्थिति बनने लगी. 1921 फर्स्ट बैच फ्रॉम एंडमान सबको रिहा करने के समय सावरकर जी को शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल. महाराष्ट्र जेल जाने के बाद आज़ादी से पहले इनकी रिहाई 1921 यहाँ से शिफ्ट किए. 1934 रिहा हुए. रिहा होने के बाद हमारे देश की आज़ादी में काफ़ी इनके सहयोग रही और इनकी डेथ 1966 26 फरवरी. ये पूरे मंथ हम उनके लिए डेडिकेट करें.
26 फरवरी इनकी डेथ एनिवर्सरी है और इनकी जन्म 1883 28 में इज अ ग्रेट राइटर कम पोएट वीर विनायक दामोदर सावरकर फ्रॉम महाराष्ट्र. नॉट ओनली Savarkar, we of a lack of freedom fighter, they are sacrificed for us. They all are unsung heroes जिनके बारे में ना ही हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़े हैं ना ही जानते हैं. Now this time they are getting a place in your heart and mind. If you feel like that, ये जेल नहीं, ये सबके लिए प्रोफेशन है. जो वर्शिप प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग सिंगल कलर से रहते हैं, you feel multi color thoughts. We said we are single, but our mind is multicolor. But here we are multicolor people. We feel very proud. We all are equal. We all are Indian. So जैसे हार है ना, हार के बीच में एक धागे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम हैं हमारे बीच में स्वार्थ ये नहीं तो कुछ नहीं. So feeling is a small thing. If you feel like that, ये जेल नहीं, ये सबके लिए critical है. Heads of the good souls, that's why we are free. And thanks to you, all of you, and thanks to my God, my parents, my teachers, and great warriors, and people are supporting us. So guide means people are saying anything here, not like that. And because of your support, we get energy. We are not an army person. I feel very proud. I'm in the border. I'll give something for the next generation. So this is a proud job. This is not a job. This is a passion. We are what we are doing. So what we are getting from you, that's a token of love. So we are survival. Thanks to you. Thank you. So And can you it's take a off your beautiful- mask if you Yeah. for a And second? Andaman is a beautiful place. It's a sweet and salt. Sweet is a greenery, and sweet freedom fighter. And you also very sweet. You're all listening my voice. And salt is a pain. It's the like ocean. So we know very well this is salty water. We are not able to drink the water. And we know very well this is place is a very painful place. And what we are doing, we are ill. And when you leave from here, you forget everything. This is our life. There's a positivity and negative thoughts. You know, so always we are saying, you know, two type of people. In our life, you know, sometimes we get a struggle, sometimes we get a happiest. Good easy. पेन हमेशा हमें हमारे लाइफ में होती है. तो हम यहाँ पे पेन फील कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद हम लोग खुश हो जाएंगे. वो हमारी ज़िंदगी है. तो ज़िंदगी को फिलोसफी के साथ ही जाना है. एंड फेथ डेडिकेशन हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्वामी विवेकानंद एंड वी आर फॉलोवर. एंड हम उनकी जैसे नहीं कर सकते बट हम कोशिश करें नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी तरह से अच्छी चीज़ों को हम बताएं. एंड्रॉयड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम we have to sit back, relax. We have to tell something for the next generation. Otherwise, they are very clever. They know very well how to operate the mobile, what's the information, how to go. But information is a different with this education. Culture is different. We have to give culture for our generation. And thanks to your support and thanks to you. Yeah. Thank you. Yeah, one second. Thank you, sir. So this is for my YouTube video. So the charges are very nominal. Please, whenever you are visiting Cellular Jail, please ensure you take a guide. You will not get such good information without a guide. I can assure you. And the charges are very nominal. For 3 of us, he is charging only 200 rupees, and that's his passion. Thank you so much. And so we are 5 guides, and my senior is Sibu, sir. This Yeah. side, we are This is the legend Veer Savarkar ji's jail. So this is still continued in memory of our legend. This is because of the courage of such heroes that we are free today in India. And if I believe now we all can feel how a prison life is, because we have lived in an era of COVID. We were the prison of health. This was a prison of East India Company, basically the British. This is His Highness Veer Savarkar ji's prison. भगवान आपकी आत्मा को बहुत शांति दे वीर सावरकर जी.
आपके जैसे हीरोज़ के लिए ही हम आज इस इंडिया में आज़ाद हैं। थैंक यू सो मच। So basically, this is the view of Cellular Jail from this cell. So this is the place for last wish before execution, taken for hanging. First museum, here comes the second museum. It's all on the conspiracies against the Britishers. So this is basically in the walls. These are the revolutionaries or the freedom fighters, and this is basically the conspiracy against the Britishers. So in the entire museum, you can see there is a conspiracy, and these are the freedom fighters. If you love history, you will definitely love this place. I have read a lot of this articles. The reason because I love history, and I especially fell in love with reading about our ancient India, the British era basically. After I have visited a lot of historical places in India, so you can definitely come in this place and you can check this out. Definitely, this is a very well maintained place, and so this is all the conspiracy, and this is all the statements against whom, against the Britishers mainly, and these are the people. So here comes a list of people who were incarcerated, basically hung or brought to Andaman. So here is the list. They didn't have any Assam, so I don't know why is Sylhet. Then one second, I just saw something here. So there is one person called Biren Chandra Sen and alias Durga Das, Kailash Chandra Sen. That is written as Sylhet, Assam, but Sylhet was in Bangladesh, not Assam. I don't know how they have written it. So this is in the period 1909 to 1938. So maybe that time Sylhet was under Assam, undivided India. So this is what the Britishers. This is all about the British and the museum and Indian history. So you'll definitely love this place, and you will fall deeply in learning after you come to this place. Yeah. So this is basically how it looks like.